हर बार की तरह इस बार भी हम लोग अपना सेशन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके लेंगे। तो आज हम लोगों को आप लोगों को बताएंगे कि आज के टाइम में स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट किस पोजीशन पे है और आगे हम लोग क्या देख रहे हैं। तो आज ज़्यादा परसेप्शंस की बातें नहीं करेंगे, आज सिर्फ डेटा पे हम बात करेंगे। तो डेटा, लेट डेटा स्पीक्स कि क्या कह रहा है मार्केट। ये सेशन करीब हाफ एन आवर का, आधे घंटे का होगा। आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पर्सनली जानते हो, मैं देख रहा हूँ जो जो ज्वाइन किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में बाद में आपका क्वेश्चन लिख सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू। सेशंस के बीच में मैं नहीं रोकूंगा, आई विल गो विद द फ्लो। हर बार की तरह हम लोग पहले देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फिर देखेंगे यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फिर आएंगे कि इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ये 4-5 एरिया, ग्लोबल इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड देन इंडियन इक्विटी मार्केट एंड देन इंडियन डेट मार्केट, तो ये 5 एरिया पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज थोड़ा सा डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हर बार की तरह, जिससे आपको क्लैरिटी होगा कि अभी हम लोग किस सिचुएशन पे बैठे हुए। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वाई वी आर सीइंग कि इंडियन मार्केट, निफ्टी ब्रॉडर मार्केट कैन रीच 25,000 in 2025. So moving ahead, we talk about the global economy first. अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को देखोगे तो इंटरेस्ट रेट ग्लोबली आर राइजिंग। 3 months cumulative policy rate hike minus cuts emerging versus developed। तो अगर आप देखोगे ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग। इसका क्या इम्पैक्ट है आपको आने वाले स्लाइड से पता चलेंगे। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि डेटा कह रहा है, आईएमएफ का डेटा कह रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। अगर 2022 में वर्ल्ड आउटपुट 3.5 था तो 2023 में 3 है एंड ये प्रोजेक्शन 3 है। सो वी अक्रॉस ऑल सेगमेंट, एडवांस इकोनॉमिक्स को अगर देखोगे तो 2022 में 2.7 था एंड प्रोजेक्शन है कि 2023 में 1.5% एंड 1.4% होगा। सो ऑल द ग्रोथ फैक्टर अक्रॉस इज स्लोइंग डाउन। इससे खास बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स देखोगे, यूरो, जापान, फ्रांस, एवरी इकोनॉमी इज श्रिंकिंग। whereas if you see इंडिया 2022 में 7.2 था, 2023 में प्रोजेक्शन है 6.1 and 2024 में it has again reversed 6.3. So there's only one country in the entire area, this IMF data, which shows that India will have a higher growth rate than any other economy in the world. Moving ahead, global supply chain pressure are easing up. ये फैक्टर, ये नॉर्मल है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखे थे सप्लाई चेन में काफी प्रेशर था, तो इसमें नथिंग न्यू अबाउट इट। द डेटा इज शोइंग ईजिंग अप, इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। इन्फ्लेशन इज शोइंग अ साइन ऑफ ईजिंग। सो अगर आप इन्फ्लेशन का डेटा देखोगे, ऑल्दो इट इज वेरी हाई, यूके का डेटा देखो, दिस इज द यूके डेटा, एंड यूरोजोन का देखो 5.3, यूएस का करीब 3, विच इज अ वेरी हाई inflation rate, and basically did across decide the interest rate where it will go. So it is still very higher। अगर आप 2021 या आगे वाले रेंज पे देखोगे, अभी भी सारे इकोनॉमीज काफी हायर रेंज पे है इन्फ्लेशन, बट इट हैज शोज ग्रेजुअली इट इज स्लोइंग डाउन। ये क्यों हुआ है? पीछे वाला स्लाइड्स हम लोगों ने आपको दिखाए थे कि सप्लाई चेन में ईजिंग आया है, which has resulted in the inflation as also easing up. But the global debt has reached a record high। आपको जो पीछे वाला 2 स्लाइड्स पहले मैंने दिखाए थे कि ग्लोबल growth has slowing down, one of the reason is that the global debt is increasing massively। अगर ये डेटा 2023 का डेटा देखोगे, this is a percentage of GDP, it has increased tremendously, although it has shown little slow, but over the years अगर 2015, 16, 17 से आप कंपेयर करोगे 22, 23 को, global debts is constantly increasing। Okay, central bank has shrinking balance sheet, albeit grudgingly। बैंक ऑफ जापान एंड ईसीबी एंड फेड को देखोगे, दे आर श्रिंकिंग देयर बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ द फैक्टर मैंने आपको बताए थे, ग्रोथ इज कमिंग डाउन ग्लोबली,
Debts has increased tremendously. Inflation, although has eased up, but still it is high. So, which is evident from this data point. Bank of Japan currently has intervened to slow the yield spike. All these factor, what I am talking about now, is that कि flow into the global bond and cash remains strong. So पीछे का जितना भी slides मैंने दिखाया कि global growth is slowing down, global debt has increased tremendously, inflation stream remain higher side, सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट श्रिंक हो रहा है. तो इसके कारण क्या हुआ है कि ग्लोबली बॉन्ड एंड कैश में ज्यादा फंड फ्लो हो रहा है, विच इज एविडेंट. अगर 2011 से अभी आप देखोगे और 2023 में अभी ग्लोबल फंड फ्लो है, कहाँ पे ज्यादा फंड फ्लो हो रहा है, वो बेसिकली हो रहा है बॉन्ड एंड कैश पे रादर देन इन इक्विटीज ग्लोबली बात करूं. सो द ग्लोबल फैक्टर्स आपको मैंने अभी तक जितना स्लाइड्स में दिखा है, इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग एज सच, विच इज क्वाइट एविडेंट. अगर आप यूरोप, यूएसए किसी भी मार्केट में जाओगे, उसका मार्केट परफॉर्मेंस से एविडेंट हो रहा है. ओके, अभी हम आते हैं यूएस इकोनॉमी में. तो ग्लोबल इकोनॉमी हम लोगों ने देखा है कि इट इज स्लोइंग डाउन, इंटरेस्ट रेट इज हायर, स्टिल गोइंग हायर, balance sheet is shrinking, debts are couple of debts are global debts are increased a lot, and inflation although a little bit reduced, but it is still on the higher side. अब देखते हैं यूएस इकोनॉमी में क्या चल रहा है. नाउ फेड मेंटेनिंग अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग. ओके, अगर आप डेटा देखोगे 1983 से, सो रेट हाइक्स मंथ सिंस फर्स्ट इंक्रीज. सो फेड ऑब्वियसली रेट हाइक करेगा बिकॉज द इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको दिखाए, इज ऑल टाइम हाई इन यूएस. सो बट दे आर स्टिल मेंटेनिंग अ वेरी डेलिकेट बैलेंस बिकॉज ग्रोथ रेट मैंने आपको दिखाए थे यूएस में भी काफी स्लो है. सो ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई करेगा तो ग्रोथ रेट विल फर्दर फॉल डाउन. यूएस रियल यील्ड टर्न पॉजिटिव वेरी रिसेंटली. सो अगर आप देखोगे कि रियल यील्ड जो है यूएस के, इट हैज टर्न पॉजिटिव vis-a-vis द अदर ग्लोबल प्लेयर्स. US inflation, wages remain cool. ज़्यादा क्विकली मूव ऑन करता हूँ. दिस डेटा ऑलरेडी शोड अर्लियर, उतना रेलिवेंट नहीं है. सो यूएस में अभी यूएस इज हायर यूएस डेफिसिट इंडिकेटिंग रिसेशन. नाउ यूएस डेफिसिट इज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. अगर आप 1948 से देखोगे एंड आज हम लोग यहाँ पे रिसेशन साइकिल में, सो व्हाट वी can say that yes, US might go into recession, okay, but Fed is balancing the act as such very well. They have not increased, and that is the reason why they have not able to increase the interest rate much higher aggressively, because they need growth also in that point. All-time credit card debts and interest rate indicating recession. All-time high credit card debt and interest rate indicating recession. So that is, देखो अगेन द डेटा पॉइंट अगर आप देखोगे, क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में, इट इज ऑल टाइम हाई. यू नो, इट इज ऑल टाइम हाई एट दिस लेवल इटसेल्फ, व्हिच वाज नेवर आउट देयर. एंड डेट का जो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट्स है, व्हिच इज आल्सो ऑल टाइम हाई. क्रेडिट टोटल यूएस क्रेडिट कार्ड बैलेंस अगर आप देखोगे 2003 से लेके अभी तक का, तो व्हिच इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव आल्सो. Most American are 400 expense away from bankruptcy. Vice President Kamala Harris. US Vice President Harris said that most Americans would go bankrupt if they had to pay $400 for an unexpected expense, while bemoaning how difficult it is for women in America to acquire abortion. So, अगर इसका कहने का मतलब है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली कहा है जुलाई 30 में, अगर उनको $400 देना पड़े, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया, यू नो, फैमिली, हर किसी के फैमिली में एक्सपेंसेस आते हैं, तो कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया $400 का, तो the family will go bankrupt. Now this is the kind of situation which is happening in US. Is rising homeschooling in America indicating recession. And another important factor, US में होम स्कूल, घर से स्कूलिंग करना ज्यादा हो गया पहले से मुकाबले. The data is already saying like that. Fed recession fear near 40 times year high.
तो फेड का जो रिसेशन कैलकुलेशन है 40 टाइम्स हायर है. Fed's keeping liquidity loose. Okay, so all these factors that Fed are doing currently to save US from getting into a deeper recession. Market expect higher US Fed rates for the next year. मैंने आप लोगों को पीछे दिखाए थे कि इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन ऑल्दो उतना ईज नहीं हुआ है, इट्स स्टिल ऑन द हायर साइड. सो फेड के पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे इंटरेस्ट रेट राइज करने के लिए. एंड द डेटा ऑल्सो इम्प्लाइड दैट point of view indicator also. So all these factors will actually lead to a very important point, is that if US is going through a very stressed time currently, okay, US interest payment on debt, defense spending. Now, US interest payment on debt is greater than defense spending. So, if you see annual defense spending, now this has never happened like before 2001, it has happened and it has just increased. So, this is a huge data point. You have to understand US defense spending was one of the highest in the world. Now, this has interest payment has increased than more than the defense spending. So why this has happened, as I already mentioned, that US में डेट्स काफी ज्यादा हो चुका है पहले से मुकाबले में, as far as the retail goes, corporate goes and government goes. US public debt to rise by 5.2 billion daily over the next decade. So you can see this data point. Okay. Now, having said the global economy and US economy, we have seen US is under deep stress because the corporate, individual and the government debts are increasing. Their inflation is still not lower, so government will have no other option to increase the interest rate, which will keep more burden on their economy. US growth is not happening. And the vice president has already said that most US citizens are just $400 away from getting bankrupt. So that's the situation of US. We have seen the other countries in the global, they are also not growing. Now, when we come to the India, when you see the data point, India is the only country in the world which is an oasis in that global desert till now. But there are some problems, sandstorms are blowing. But still, India is a far, far better position globally. So in July, what are the top headlines in July? IMF raises India's FY24 GDP growth forecast by 20 basis point to 6.1%. Morgan Stanley upgrades India's rating to overweight, downgrades China's to equal weight. Net direct tax collection grows 16%. India's becomes Apple's fifth largest iPhone market in the second quarter. India's manufacturing PMI fall marginally to 7.7. Indian smartphone market set for second consecutive year of contraction after 14 years. India's services PMI jumps to 6.2 in July, highest since 2010. So all these factors, which actually indicates that India is having growing in various parameters. You can also see in the coming slides. Economic activity holding up in June. जीएसटी कलेक्शन अगर आप इंडिया में देखोगे अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक, इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड. एक साल पहले हम लोग 1.44 लाख करोड़ पे थे, अभी 1.65 लाख करोड़ हुआ है. So which probably has increased 10% from the last 1 year. Capacity utilization reaches 74%. It was way below during the COVID period, but it has reached 74%. Still, there is a scope to increase the capacity utilizations. Like we can go to 85 also, like we've gone earlier also. So if that happens, which you will see the cost factor, you will see the benefit of cost factor coming back to the balance sheet. Corporate leverage as 15 years low. Like if you see the corporate leverage, which is at 15 years low, starting from the FY 2002. Now, government continue to increase the capex. So if you see this data point, this is center, state and public enterprises. So government already has increasing their capex spending. New private project announcement at all time high. अगर आप 2023 का डेटा देखोगे, new private project announcement is at all time high and a percentage of GDP is 9.6%.
फाइनेंशियल सेक्टर इज हेल्दी एंड साउंड. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. अगर आप बैंकिंग सेक्टर के साउंडनेस इंडिकेट करोगे, अगर बैंकिंग सेक्टर किसी कंट्री के स्ट्रांग है, विच एक्चुअली इंडिकेट्स द कंट्रीज फाइनेंशियल हेल्थ. अगर आप क्रॉस एडवांसेस देखोगे तो 2002 में था 121 यूएस बिलियन इंडिया में, अभी 2023 में 1690. हिमंगस ग्रोथ. अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे बैंक में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 2002 में 11% हुआ करता था, अभी वो 3.9% है. नेट एनपीए जो एक्चुअली में पैसा जो हम उधार देते आते नहीं है, विच इज ओनली 1% नाउ, which was used to be on 5.8%. So thanks for the Bankruptcy Act and all those stuff which is government has initiated in last 10 years. So average CRAR, capital adequacy ratio, अगर आप देखोगे, so which has also increased. So all these factors is telling me that India का banking sector has really become strong. Now banking is a one sector which has not performed as far as the stock price goes. So watch out in this particular sector. That's why I'm saying the private banking sector space we are at discount right now. मूविंग ऑन, खरीफ सोइंग हैज इम्प्रूव. तो 2022 से लेके 2023 में अगर आप डेटा पॉइंट्स देखोगे तो द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मोर और लेस मोस्ट ऑफ द आइटम. अगर आप बेयरिंग पल्सेस को छोड़ के बाकी आइटम्स को देखोगे, बजरा, राइस एंड सोयाबीन हैज इंक्रीज्ड more or less, it has been remained steady. Rural India is improving. Agricultural real GVA growth अगर आप 21 से अभी तक देखोगे, it has increased. Domestic two-wheeler sale has increased over the years. ट्रैक्टर सेल बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है किसी भी इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ट्रैक्टर न्यू ऑर्डर से आने से पता चलता है कि वेदर रूरल इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट. सो दिस इज अ ट्रैक्टर सेल डेटा. अगर आप देखोगे जनवरी से लेके अभी तक इट हैज बीन ग्रोथ मंथ ऑन मंथ. So that's a good point overall. So strong support from service exports, a significant pickup already seen in various service sector exports, rising role of GCC in India. Indian IT sector hiring expected to go down. Indian IT service, we have seen there has been a stress in the IT company, and much of the IT stock have corrected in last couple of years. So we expect a little bit more correction will happen in the IT sector, but it is a very good position right now in IT sector as such to keep accumulating right now. Okay, so if you are looking to invest, IT is some sector where you can start picking up, but gradually, not aggressively. Okay, so IT sector expected to go down because why? I have already showed you the global and US economy situation. Most of the IT exports happen to those economy and they are shrinking. So that's quite obvious from this point of view. Oil prices risen 14% from the previous month. So we all know about that thing. And that is one of the factor which can add up to the Indian inflation also if this keep on increasing. Core inflation remains sticky. Changes annual rate. अगर आप core inflations को देखोगे, although it is in the range of 2 to 8%, but it remains sticky, right? Uh, so it's like 4.67% right now. So it remains sticky. So government will keep a close eye on this thing, and if it increases from here, you can expect a rate hike from here, but not precisely happening very soon because we have a monsoon which is well spread off bit lately because we have an overflow of monsoon in North India. There are floods in a couple of other places, while in some other places it has been a below normal. But overall, monsoon has been a normal average. Oil price had started growing up. That we need to check for that. So overall, inflations we don't expect to rise further from here itself until unless we have the oil price going out of hand from now onwards. June witnessed spike in household joining Narega works, monthly employment under NREGS. So that's the number which we have here itself. Moving on quickly, GNPA in the credit card segment is rising. So अगर आप ये डेटा देखोगे तो GNPA from March 2021 से लेके March 2023 it has slightly increased.
Okay, it has come down and then it has slightly increased. And different segment, अगर आप home loans, consumer durable credit cards देखोगे, so I have shown you the different data point, different segment. In the past, we have missed opportunities. So I have shown you a couple of data points of India. There are other much more data points of India available. Why I am saying 2025, 25,000, you will be able to understand in next 2 to 3 minutes. And now we have, in the past, we have missed out a couple of opportunities. Like it is India's moment or decades, even the century. Morgan Stanley, all the big players have said we have been there before. So we know all those stories ahead. Now, coming back, so we talk about the Indian economy. I give you a data point about we have a very strong GST collection coming up. Inflation number are in control as far as the Indian government goes. The corporate, the capacity utilization is increasing. So all those factors are positive from the Indian point of view. Now, let's see what it reflects in the Indian equity market. Now, this is an important data point. Q1 FY24 results are in line of expectation. Now, now in Nifty universe, if you see, like there are 8 companies which the number of sales has increased, EBITDA increase in 9 companies, PAT increase in 13 companies. In line in this line and below is this. So you can see that as far as the Nifty goes, we have number of companies which are in line with the expectations are higher, okay, and which are above expectations are also higher, and below expectation is lower side. So that's the Nifty total number of companies, overall EBITDA, profit after tax, profit before tax, we have, and sales number we have shown it in a summarized form. Now revenue growth slides further. Now this is an oil for all firms Y-on-Y growth level जून 19 से लेके जून 23 तक. Okay, we have taken ex BSFI, banking and financial services, all firms, all company. This blue is orange is ex BSFI and this is ex BSFI and OMCs. Similarly, record earning का भी आप देखोगे, so जून से लेके 2023 तक it has increased. Okay, all firms. If you see the all firms, not getting into the more details of other things. So that's the point of Nifty universe. So most of the company's sales and profit has increased or in line with the expectations. And that is the reason why we have seen the market has moved in couple of months' time. Forget about last couple of days market movement in a downfall. That is a good way for re-enter of many of you into the market at this level. Corporate profit growth has been ahead of GDP. So if you see the corporate profit growth, this is GDP. निफ्टी 500 का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे 2003 से लेके 2023 तक it has shown a 34% CAGR, while GDP has grown in this year 10.7 CAGR in INR volume term. So there it's clearly it is showing that the corporate profitability, Nifty 500 companies ka PAT has increased more than the GDP. So moving on, corporate profit to GDP ratio above long-term average, obviously because of the last slide I have already shown. Corporate profit to GDP ratio above long-term average. So in 2023, agar long-term average 3.7 लूँ, तो अभी we are at 4.1. So that's a positive indicator. Valuation marginally above fair value. अगर आप निफ्टी को प्राइस अर्निंग को 1 ईयर पी देखोगे, निफ्टी में नॉर्मली एवरेज पी रेशियो है 18.4, बट करेंटली 1 ईयर फॉरवर्ड पी इज 19.1, स्लाइटली हायर विच इज एग्जैक्टली एट अ फेयर वैल्यू. अगर आप मिड कैप को देखोगे, मिड कैप का नॉर्मली एवरेज निफ्टी पी रहा है 23.4, अभी 24.9 है, नॉट वेरी हायर, ऑल्सो वेरी मार्जिनली हायर. स्मॉल कैप में थोड़ा सा 10% आप बोल सकते हो कि वी आर एट प्रीमियम राइट नाउ. अदरवाइज एट करंट लेवल, दिस डेटा इज अ कपल ऑफ डेज बैक, so current level after the correction it has more or less in sync with the valuations.
BSE SME market cap crosses 75,000 crore, 440 web company listed on platform. So there has been an aggressive listing of platform via IPO in the coming 1 or 2 months, which you can already see. So Nifty का जो valuation आज के time में है बिल्कुल at par है. So don't think that market is costly right now. The P ratio is exactly indicating that thing. Market capitalization to GDP ratio declined from its FY22 high. So market capitalization to GDP अगर आप average 80% था तो अभी करीब 95 है. So which is absolutely in line, which is not higher also. Indian stocks are resilient. The data is already showing that. So moving on, capital flow favoring other emerging Asian market over China. India China से अदर इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल फ्लो ज्यादा हो रहा है. ये डेटा आपको आगे चल के और क्लैरिटी के साथ दिखेगा. देखो एफआई अगर फ्लो देखोगे, इंडिया इज द हाईएस्ट इनफ्लो अमंग इमर्जिंग मार्केट पेयर्स इन जून 2023. अगर आप जून मार्च से लेके देखोगे, इंडिया में सबसे ज्यादा एफआई का फ्लो आ रहा है. इनफैक्ट लास्ट 2-3 मंथ्स में देयर इज अ मेजर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लो आया है. नन ऑफ द कंपनी उतना फ्लो आया है. इफ यू सी द ताइवान आल्सो इट हैज डिक्रीज्ड, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील, एवरीवन हैज लोअर देन द इंडियन एफआई फ्लो. जो पिछले 3-4 महीने में मार्केट में उछाल आया है, डीआईआई फ्लो तो कंसिस्टेंटली रहा है, डोमेस्टिक फ्लो तो कंसिस्टेंटली रहा है, बट एफपीआई का फ्लो कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड हुआ है इन द लास्ट 3-4 मंथ्स. अगर आप जून से देखोगे, इट वाज कॉन्स्टेंटली ब्रैकेट में, मतलब इट इज गोइंग अवे. अगर ब्रैकेट में नहीं है तो इट इज पॉजिटिव साइन. Okay, so it has consistently flowing in the last 2-3 months, so which is a strong indicator that globally the countries are much more bullish on India than any other country in the world. जो डेटा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो which is quite evident from their perspective also. India the best performing market since COVID. अगर आप इंडिया का परफॉर्मेंस देखोगे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में कोविड के से लेके 226% हाइक हुआ है. स्मॉल कैप में 212%, निफ्टी में 130%, सेंसेक्स में 133%. वैरेज अब यूएस, ब्राजील, संघाई सारे कंट्रीज को देखो, इतना परसेंट ग्रोथ किसी में नहीं हुआ है. So that is the reason why the global money are also coming towards India, and why they are coming, because the corporate data is also indicating a positive market flow. India exit is easy but entry is difficult. ओके, सो निफ्टी का इंडेक्स देखोगे, सो अगर आप अक्टूबर 21 से 22 का देखोगे -10%, जुलाई 22 से लेके जुलाई 23 +24%. बट हैविंग सेड दैट वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन इंडिया. हैविंग सेड दैट बी रेडी फॉर वोलेटिलिटी. 19,500 19,000 रेंज से लेके 17,000 और 21,000 कहाँ तक ये जाएगा, ये बैलेंस किस तरफ झुकेगा, ये डिपेंड करता है, नीचे की तरफ जाने में डिपेंड करता है अनसर्टन ग्लोबल मैक्रोस. मैंने आपको ग्लोबल मैक्रोस के बारे में बताया. ग्लोबली इज सिचुएशन इज नॉट गुड एंड इंडिया कैन नॉट रिमेन आइसोलेशन. ग्लोबल सिंक करेगा, इंडिया अकेले ऊपर जाएगा, हो नहीं सकता, बिकॉज वर्ल्ड हैज बिकम अ वन फैमिली नाउ. सो ग्लोबल एक फैक्टर्स ऑब्वियसली रहेगा. ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग मैंने आपको दिखाए थे, रिस्क ऑफ अर्निंग ट्रेजेक्टरी एंड सप्लाई ऑफ पेपर. सो ग्लोबल देयर इज अ स्ट्रेस आउट देयर. बट पॉजिटिव साइड क्या है कि यील्ड्स आर सॉफ्टनिंग, फेवरेबल इंडियन मैक्रोस, इलेक्शन रिजल्ट्स आर एज पर एक्सपेक्टेशन. सो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट 8-9 महीने एडवांस चलता है. सो इलेक्शन रिजल्ट्स आर मोर और लेस दे आर फैक्टरिंग इन. इंडियन मैक्रोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप लोगों को मैंने पहले ही दिखाए थे, एंड यील्ड्स आर सॉफ्टनिंग. वी आर डोंट एक्सपेक्टिंग कि inflation can go higher from this side, so which can actually positively make the market move on from here itself. So I have already said that December tak 70,000 Sensex cross karna, don't expect, don't be surprised, it can happen. So move on. ये क्यों होगा? Because of the Indian macros and the stable government, and yields are softening, all those factors coming in. Now, keeping in these situations, we are marginally overweight in large cap. Why we are saying is that कि large cap का जो निफ्टी पी मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल at par है, while small cap and mid cap उनका प्राइसिंग आप थोड़ा सा ऊपर के साइड देखोगे. एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करते होंगे, पिछले 10 दिन पहले
से लेके आज मार्केट नीचे गया हुआ, सेंसेक्स निफ्टी नीचे गया हुआ, और 10 दिन पहले का जितना भी फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एनएवी और आज के एनएवी में डिफरेंस है, वो ऊपर गया हुआ है. So that is clearly giving an indication that large and mid cap, those segment has actually grown high. Sorry, mid and small cap. Large cap जो निफ्टी बियर करता है तो उसमें उतना उछाल आया नहीं है, which is still at very attractive pricing पे है. So we are little bit marginally overweight in large cap. And what I can say that at this level, don't push all your money into the market. Keep some cash. You can expect some kind of correction happening because of the global factor which is in place. अगर Fed दोबारा एक rate hike करेगा, so there you can expect some money going out of India that can also pull down the market for a shorter period of time. So quickly हम डेट आउटलुक पे देख लेते हैं, ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे. फिल्च डाउनग्रेड रेजिंग कंसर्न यूएस डेट ट्रैजेक्टरी. मैंने आपको यूएस का बताए थे कि डेट में काफ़ी ज़्यादा डेट्स है, सो there is a downgrading risk rising. Global yields have started moving upwards. Now yields and interest rate inversely proportionate होते हैं. मेरे सेशंस में आप लोगों को पहले बताए थे, तो it has started moving upwards. Fed's का dilemma है. You said no more rate hikes. Actually, I said no more rate hikes. So I have told you the Fed's dilemma. Rate hikes करेगा तो growth slow down होगा. They are facing imminent recession. So they are at a dilemma. Rate hike करना है या नहीं करना है. Liquidity is plenty. इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो सरप्लस लिक्विडिटी एंड 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड yields, so वो है. So we are safer on that point of view. Inflation rises higher than estimate to 4.81 in June. July number to be above 8% due to tomato prices. You all know the tomato prices and all those stuff has increased over the time. So inflation number can go higher up 6% that time. अगर 6% ऊपर जाएगा तो probably there could be some kind of government intervention as far as the interest rate goes, but that will be a very short term implication. इसलिए मैंने आपको बताया था कि वोलेटिलिटी भी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बट डोंट but things will be normalized. This will have a very temporary phenomena going ahead. OIS curve is also reflecting push in rate cut, to 2024. अगर आप डेटा देखोगे, so which is also evident, it has been shrinking the gap. Opportunity 3 to 7 year segment is there. So if you are investing into bond market, तो 3 से 7 साल के सेगमेंट में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है इस टाइम पे, because of that unique debt propositions, interest rate and yield curve movement. Rate to consolidate current level before resuming downward. So पॉइंट क्या है कि रेट अभी 10 ईयर जिसे 7.2 पे है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी, वी हैव अ पॉजिटिव डेट, एफआईआई फ्लो ज़्यादा है, इंडेक्स इंक्लूशंस and Fed rate hike. We all know this thing: fiscal slippage, monsoon inflation, and credit pickup. So these are the two we are hanging in between. So, but we can expect that थोड़ा सा at level पे consolidate करके, because of some commodity prices trading high, it can again go downwards. Downward जाएगा तो we can see again another phase of equity market growth, because it is very linked to debt equity market. The current it is very linked to the debt market, the current equity market. Okay. So moving on, gold prices अगर आप देखोगे, gold prices March से लेके December, then January से लेके July, we have seen certain movements out here. Now central bank are stockpiling gold reserve. Now if you see from 19 to 2019 से लेके March 2023, now rolling 4-quarter total net gold purchase by central bank, it has been increasing. We know that Russia and China, they have kept a huge gold reserve. India is also increasing their gold reserve. We have already known, because India is looking to strengthen their currency. We have already seen, UPI being relevant in France, in Dubai and Middle East, and some other countries will see the UPI coming into place. That means Indian rupee will be usage in all those countries. So India is actually piling up its gold reserve, because India is a better position right now. That will be a hedge against the other currency factor and any slippages happen in between, so which is a very prominent thing. And also gold is something which actually strong gold reserve portrays the country's fiscal
strength. Falling Fed rate support gold prices. Now, if you have any one of you have invested in cryptos, this is a data point for you, like Nifty NFT, non-fungible token that crashes as we have warned earlier. Now, all the crypto investors who have invested in cryptos earlier, we have already told you just to move out from there because of the regulatory glitches happening, and lot of terrorist and other activities are happening. So government are keeping a very keen eye on those things. The sector has the blockchain, which is deregulated, is more of being used by a manipulation, and that is the reason it has been the actual usage is not happening as per, and it is more of becoming players, some niche players are working out on those things. So as we have already portrayed, stay away from cryptos. Now, a couple of more data points I will show you before I signing off, just to give you why we are saying Nifty 25,000 in 2025. So if you see, India has become a relatively Atmanirbhar in pulses compared to edible oil. So that's a data point for you. Now, import of pulses has gone high and coming down, and import of vegetable oils. So that's a data point. And quickly go through the couple of data points for here. Now, infrastructure creation at fast pace. Now, airport before 2024 was 74. Now, in last 9 years, 152. Power in villages is 40%. It has gone up to 95% now. AIM 7, now it has 222. So if you see the national highway, 25,700 kilometer before 24, and now it is 53,700. So there has been a massive improvement in the infrastructure segment, which is quite evident from all this data point. Okay, now moving on, Indian external vulnerabilities improved. So FX forex reserve to external debt. So that's the data point we have now. As I already told you that we have financially we are much more stronger than what we used to be earlier. So that data point is also saying here itself. Consistent economic resilience over the past 7 years. So Indian GDP, if you see the number point out here, it has been, despite POP crisis, severe drought, Asian financial crisis, global financial crisis, uh, we have demonetization policy paralysis. Now, Indian GDP has remained more or less same, bearing those COVID period. That's the period that we have to be. That's normal because that time the transactions was not happening. But more or less, Indian GDP was resilient as far as the global economy and other countries goes. India to be the key contributor of 2020 world GDP growth. अगर आप वर्ल्ड कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ इन 2023 देख रहे हो, so this is the China, and this is something which is India is coming up very strongly. Okay, US is also very smaller out here itself. India to be the world third largest economy. Forecast for India by 2023 is the Standard Chartered analysis. US, if you see the GDP wise, so that's what we are projecting 2023 में. अभी लेटेस्ट ये है, इंडिया का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, एंड 2023 वी आर एक्सपेक्टिंग 6 ट्रिलियन. सो ये नियर अबाउट डबल हो जाएंगे. सो अभी से लेके 2023 से लेके 2030 तक जीडीपी विल ऑटोमेटिकली गेट डबल्ड, near about doubled. So अगर डबल होने का मतलब है, I already told you earlier that market capitalization will also double, which is quite evident. GDP as per as market capitalization आपको मैंने पहले दिखाए थे डेटा पॉइंट. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल होने का मतलब है स्टॉक मार्केट में अभी अगर सेंसेक्स का वैल्यू 65-70,000 के आसपास है, so it is going to easily touch 1,40,000 to 1,50,000 in next 7 years, that easily. So that is a projection which is happening. Okay, per capita income abhi 2,450 hai, will go to 4,000. If you see all the data point out here, which is going to increase. So what will be the driver of growth? Consistent policy reform, macro stability, healthy external financial sector, large share of working group, digitalization and political stability. India's good trade started to move up in a value chain. अगर आप export को देखोगे, imports को देखोगे, every sector we are improving. I have shown you the data as far as from 2010 से लेके अभी तक का. So if you see all data points, we are increasing.
Average household income projected to increase 1.5x from 2019 to 2030. अगर आप 2010 से लेके 2030 तक देखोगे तो एवरेज हाउसहोल्ड जो income है which will going to increase which is going to increase by 1.5 times. So that's a number for you. So मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया. This is the last slides I have for you, and most of the data point are clearly indicating that India is going to be a stronger among all the nation in the world globe. Currently, as these situations, मैं किसी कंपनी के नाम नहीं लूँगा because we are giving a market updates, so which you can connect with me over a WhatsApp, and if any query you have. So we are seeing IT sectors, they will have a challenge because most of the global players, those global countries, Europe and US, are in a deep stress, and most of the ITs are being exported. So एक वहाँ पे challenge मिलेगा. Although it has been corrected, I expect a little bit more correction can happen. But you can slowly pick up some IT stocks from here itself for a long term perspective. बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि इंडिया का बैंकिंग सेगमेंट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऑल द डेटा पॉइंट्स आर स्ट्रॉन्ग, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनपीए, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवांसेस एंड एवरीथिंग. सो बैंक्स यू कैन एक्चुअली कीप इन्वेस्टिंग इन private banks, especially those two segment we are see positive. Infrastructure is another sector where you can expect a huge cash flow happening out here. So that is one sector which you can look up for. And as a whole, India Nifty fairly valued hai. Large cap is the place where you can should put your money. Mid cap and small cap थोड़ा सा premium पे अभी है. So that's all from my side. अगर आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, डोंट पुट ऑल एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट राइट अवे, बट आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक वे में करना है. अगर आपका बल्क इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको स्प्लिट कर दीजिए 6 महीने 1 साल के लिए. नहीं तो बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग करेंटली इज दैट आप लिक्विड फंड में डाल के उसको डेली एसटीपी कीजिए. दैट द काइंड ऑफ रिटर्न यू विल गेट इन नेक्स्ट 1 year विल बी फेनोमेनल. हम लोग I can see the projection number of 70,000 crossing Sensex by this December. It can happen, and all the data points are clearly indicating that India can reach 2025 by 2020 25,000 by 2025, and 2030 तक जो पीछे का स्लाइड्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि GDP will double. So if GDP double, market capitalization has to be doubled. Okay, so if the market capitalization doubled, then the Sensex and Nifty number will double from whatever stages that we are here into. So that's all from my side. If you have any query, you can drop by in my WhatsApp number. I can see most of people, they know me who have joined today. Thank you all for coming to the session. Every month, near about this 15th or 16th, we normally keep the market update so that you able to understand what is happening. Most of our updates are basically data driven, so we don't go by what media and other hypothesis says, but it's a real actual data which can actually give you confidence. The data has been collected from different sources, so those are all authenticate data points that we use to give you and give you a portrait about what's happening there in the global economy as well as the Indian economy. Thank you very much for attending today's sessions. I'm signing off from